Exercise 2.2 का 15 sum. Find the value of x if tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4. Then find x. करेक्ट. अब हम चालू कर दोनों साइड साथ में लेके चालू करेंगे. सो tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4. अब tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स सिंपल फॉर्मूला. Therefore tan inverse x minus 1 upon x minus 2 x plus 1 upon x plus 2 whole upon 1 minus x minus 1 upon x minus 2 x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4. अब हम यहाँ LCM लेके सिंप्लीफाई करेंगे. Therefore tan inverse cross multiplication, that is x minus 1 x plus 2 x plus 1 x minus 2 whole upon x minus 2 x plus 2 whole upon, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सामने जाएगा. x minus 2 x plus 2 minus x minus 1 x plus 1 upon x minus 2 x plus 2 is equal to pi by 4. हमने सिर्फ LCM लिया. अब x minus 2 x plus 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. Now open the bracket. Therefore tan inverse ओपन करते हैं. So x square plus 2x minus x minus 2 plus x square minus 2x plus x minus 2 whole divided by x minus 2 x plus 2. So we get x square minus 4 x square minus 1 is equal to pi by 4. Clear? Now here plus 2x minus 2x cancel, minus x plus x cancel, so remains only x square plus x square 2x square minus 2 minus 2 minus 4. So this equal to tan inverse 2x square minus 4 upon, open the bracket, so x square minus 4 minus x square plus 1 is equal to pi by 4. Clear? Now here x square cancel. Therefore tan inverse 2x square minus 4 upon minus 3 equal to pi by 4. अब मैं ये tan को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ. So 2x square minus 4 upon minus 3 is equal to tan pi by 4 and tan pi by 4 is equal to 1. अब ये minus 3 को मैं सामने ले जा रहा हूँ. Therefore 2x square minus 4 equal to minus 3. 4 को सामने ले जाओ. So 2x square is equal to 4 minus 3 equal to 1. Therefore x square is equal to 1 by 2. अब x is equal to plus or minus 1 upon root 2, plus or minus 1 upon root 2. ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन हमको फिर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. अब वेरिफिकेशन के लिए हम x की वैल्यू इधर प्लेस करके pi by 4 आता है कि नहीं वो चेक करेंगे. नाउ आई विल टेक बोथ वैल्यू. इफ verification
x equal to plus or minus 1 upon root 2, then मैं सीधा इधर डालता हूँ by 1. This is LHS and this is RHS, right? So tan inverse x 2x square minus 4 upon minus 3. Now put the value of x equal to this. So tan inverse 2 into x square है. So 1 by 2 minus 4 upon minus 3. x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 upon 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 upon 2 हो जाएगी. Now ये 2 and 2 cancel. Therefore tan inverse minus 3 upon minus 3. Therefore tan inverse 1. Therefore tan inverse tan pi by 4 is equal to pi by 4 is equal to RHS. Therefore we can write solution set is equal to curly bracket pi by 4. This is the final answer. अब हम अगला सम लेते हैं. Find the value 16th sum. 16th sum, sin inverse sin 2 pi upon 3. Now see here, 2 pi upon 3 is not included in the domain of sine function, right? That is, here 2 pi upon 3 does not belongs to the domain of sine, that is closed interval minus pi by 2 to pi by 2. Now हम इस टर्म को लास्ट ईयर कन्वर्ट किया था, ऐसे कन्वर्ट करते हैं. साइन इनवर्स साइन pi minus pi by 3. So pi minus second quadrant sine function positive function does not change. So इसका आंसर हमको मिलेगा sin inverse sin pi by 3 and that is equal to pi by 3. So this equal to pi by 3. अगला सम लेते हैं 17 सम. tan inverse tan 3 pi by 4. Tan inverse tan 3 pi upon 4. Same thing. 3 pi upon 4 is not contained in the domain of tan function. That is, here 3 pi upon 4 does not belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2. Right? So we have to convert. Now see here, tan 3 pi by 4. Tan 3 pi by 4. So tan inverse tan pi minus pi by 4. Pi minus pi by 4 is 3 pi upon 4. Now pi minus second quadrant tan negative function does not change. So we can write, so this equal to tan inverse minus tan pi by 4, right? Now tan inverse minus x, minus बाहर निकलेगा, so minus को मैंने बाहर निकाल दिया. tan inverse tan pi by 4 and that is equal to minus pi by 4. This is the final answer. Correct? अगला सम लेते हैं cos inverse sum number 19. Sum number 19. Find the value cos inverse cos of 7 pi by 6. Correct? Now here again 7 pi by 6. 7 pi by 6 does not belongs to closed interval 0 to pi. So we have to convert 7 pi by 6 into this interval. So cos inverse cos of pi plus pi by 6. Pi plus pi by 6, 6 1 ja 6, pi plus pi 7 pi by 6. Now pi plus quadrant number 3, cos negative function does not change. So minus cos inverse minus cos pi by 6. Now cos inverse minus x
we know cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse. So we apply this formula. So this equal to pi minus cos inverse cos pi by 6. Clear? According to this formula. Now pi minus pi by 6, that is equal to 6 pi minus pi upon 6 is equal to 5 pi by 6. Next sum number 20. Sum number 20, sine of pi by 3 minus sine inverse minus 1 by 2. Clear? Now सबसे पहले ब्रैकेट में साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 2 माइनस बाहर निकलेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस x, सो माइनस साइन इनवर्स, सो माइनस बाहर निकल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. सो दिस इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स ये 1 बाय 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी माइनस एक बाहर आ गई. नाउ साइन की वैल्यू 1 बाय 2 होती है पाई बाय 6 पे. सो दिस इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6. नाउ साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 और पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 that is 60 plus 30 90. So this is pi by 2 sine of pi by 2 and that is equal to 1. Correct? Now 21st sum of this exercise, tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. Correct? Tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. Now we apply theory. Tan inverse tan pi by 3 minus, now cot inverse minus x, so pi minus cot inverse x, so pi minus cot inverse root 3. So this equal to simple pi by 3 pi minus cot inverse root 3 यानी cos pi by 6, right? Cot pi by 6. So this equal to pi by 3 minus pi minus plus pi by 6. Now here LCM 6. So this equal to LCM 6. So 3 2s are 2 pi minus 6 pi plus pi 2 plus 1 3 minus 6 minus 3 minus 3 pi by 6. So minus pi by 2. This is the final answer. अब हम चालू करते हैं मिसेलेनियस एक्सरसाइज. मिसेलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. मिसेलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. Say find the value of the following. First sum cos inverse cos 13 pi by 6. Here 13 pi by 6 not belongs to closed interval 0 to pi. Therefore we convert this angle into the domain of cos. So cos inverse cos of 2 pi plus pi by 6. See here 6 2s are 12 pi plus pi 13 pi. Now 2 pi plus first quadrant. All trigonometric functions are positive. Therefore cos is positive and function does not change. So this equal to cos inverse cos pi by 6 and that is equal to pi by 6. Correct? Now second sum tan inverse tan 7 pi by 6. Tan inverse tan 7 pi by 6. Again 7 pi by 6 is not in the domain of 10, therefore we convert into the domain of 10. So tan inverse 10 pi plus pi by 6, pi plus
third quadrant, tan positive, and function does not change. So tan inverse tan pi by 6, that is equal to pi by 6. Correct? Now third sum is prove the following. Question number 3, prove that 2 sin inverse 3 upon 5 is equal to tan inverse 24 upon 7. हमको ये प्रूव करना है. हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला सिर्फ tan इनवर्स में ही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट sin इनवर्स इनटू tan इनवर्स. So we draw the triangle, right angle triangle. So starting with LHS 2 sin inverse 3 upon 5. So this equal to, this is right angle triangle, opposite side hypotenuse, ये वाला angle है, opposite side 3, hypotenuse 5. So this become 4 according to Pythagoras theorem, triplet. Now conversion to tan inverse opposite upon adjacent, that is 3 upon 4. Now 2 tan inverse 3 by 4, दो बार लिखेंगे हम. So tan inverse 3 upon 4 plus tan inverse 3 upon 4, right? Now see the product, 3 upon 4 into 3 upon 4, that is 9 upon 16 less than 1. So we apply here simple formula. So tan inverse 3 by 4 plus 3 by 4, 1 minus दोनों का प्रोडक्ट 9 by 16. Clear? Now taking LCM, we cannot take LCM for, we take LCM only 16, cross multiplication, ताकि 16 कट हो जाए. So this equal to tan inverse 4 3s are 12 plus 4 3s are 12 upon 16, correct? Whole upon 16 1s are 16 minus 9 upon 16. So 16 cancel. Now 12 plus 12, that is 24. 24, the 16 minus 9, 7, and this is our RHS. So third sum is complete. अगला सम लेते हैं. Sum number 4. Sum number 4 भी prove that है. Sum number 4, question number 4, sin inverse 8 upon 17 plus sin inverse 3 upon 5 is equal to tan inverse 77 upon 36. Clear? 77 upon 36. Here भी हमको sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है. सो हम चालू करेंगे LHS से. LHS sin inverse 8 upon 17 plus sin inverse 3 upon 5. So we draw two right angle triangle, right? So बाजू में करते हैं. फर्स्ट वाला के लिए और ये सेकंड वाले के लिए. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 225 का स्क्वायर रूट 15. करेक्ट? इधर भी 3 upon 5. सो 3 5 4. सो दोनों को मैंने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो. सो दिस बिकम tan इनवर्स 8 upon 15 plus tan inverse 3 upon 4. करेक्ट? sin इनवर्स का tan इनवर्स में कन्वर्जन हो गया. sin इनवर्स का tan इनवर्स में कन्वर्जन हो गया. अब दोनों के बीच में प्लस है तो we check the condition. Now product of the angle less than 1. Here 8 3s are 24 upon 60 less than 1. Therefore we apply simple formula. So tan inverse 8 upon 15 plus 3 upon 4, 1 minus 24 upon 60.
Now taking LCM on numerator, so this equal to tan inverse 8 4s are 32, 15 3s are 45 upon 60 minus 24 upon 60. So 60 cancel, right? Now 32 plus 45 77. So this equal to tan inverse 77, 60 minus 24, 36, and this is our right hand side, that is equal to RHS. Clear? अब हम अगला सम करते हैं, सम नंबर 5. Sum number 5 is, again prove that cos inverse 4 by 5, cos inverse 4 upon 5 plus cos inverse 12 upon 13 is equal to cos inverse 33 upon 65. क्लियर? अब हम चालू करते हैं LHS से. LHS से चालू करते हैं, स्टार्टिंग विद LHS. सो cos इनवर्स 4 upon 5 प्लस cos इनवर्स 12 upon 13. cos इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. अगेन वी ड्रॉ टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? Now cos adjacent upon hypotenuse. So 4 is here, 5 is here. So this become 3. इधर आएगा 12, इधर आएगा 13. So 13 square 169 minus 144, that is 25. So square root is 5. Clear? So this become tan inverse 3 upon 4 plus tan inverse 5 upon 12. क्लियर? दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया. नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ द एंगल. 5 3 are 15, 15 upon 48 less than 1. So we apply simple formula, जो अगले सम में अप्लाई की थी वो. So tan inverse 3 upon 4 5 upon 12, 1 minus 15 upon 48. Clear? Now taking LCM. So this equal to tan inverse 12 3s are 36 plus 20 upon 48 whole upon 48 minus 15 upon 48. So 48 cancel. So this equal to tan inverse 56 upon 33. Now हमको आंसर लगाना है in terms of cos में. So again I draw right angle triangle. This is tan inverse 56 33, 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट हमको 65 ही मिलेगा. So लिख ही देने का. So this equal to tan inverse का cos inverse में conversion 33 upon 65, that is equal to RHS. Clear? अगला सम करते हैं, सम नंबर 6. Sum number 6 is, again prove that sixth sum, cos inverse 12 upon 13 plus sin inverse 3 upon 5 is equal to sin inverse 56 upon 65. Clear? So first of all we have to convert into tan inverse, क्योंकि हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला tan इनवर्स में ही. सो स्टार्टिंग विद LHS, cos inverse 12 upon 13
plus sine inverse 3 upon 5. Now we draw two triangle. First triangle is that right angle triangle. Second triangle for this. Clear? 12, 13. So 5, 3, 5 to 4. So conversion of these. Tan inverse 5 upon 12 plus tan inverse 3 by 4. Clear? Now again see that 5 3s are 15. Product of the angle again less than 1. So simple formula. So this equal to tan inverse 5 upon 12 plus 3 upon 4 upon 1 minus 15 upon 48. Now we take LCM. So this equal to tan inverse 5 4s are 20 plus 36 upon 48 minus 15. LCM cut. So this equal to tan inverse 56 upon 33. 56 upon 33. Now इसको हम cos sin में कन्वर्ट कर दें. So this becomes sin inverse 56 upon 65. That is equal to RHS. तो इधर ट्रायंगल ड्रॉ करके कर देने का, राइट? अगला सम लेते हैं. Sum number 7. Sum number 7. 7 sum is prove that tan inverse 63 upon 16 is equal to sin inverse 5 upon 30 plus cos inverse 3 upon 5. So इधर हम LHS के बदले RS दो टर्म में से एक टर्म में जाने का. इधर एक ही टर्म, इधर दो टर्म है. तो चालू करेंगे हम RHS से. So RHS is equal to sin inverse 5 upon 13 plus cos inverse 3 upon 5. तो first of all we convert this into tan inverse, this into tan inverse. बराबर है? So right angle triangle again. Right angle triangle. So 5, 13, 169 minus 25, 144 का square root 12. Either 3, 5 to either 4. So conversion B, tan inverse opposite upon adjacent, tan inverse opposite upon adjacent. So 4 by 3. Again see 5 4 that 20 upon 36 less than 1. That was simple formula. Tan inverse 5 upon 12 plus 4 upon 3, 1 minus 20 upon 36. Now taking LCM cut. So tan inverse 5 3s are 15, 5 3s are 15, 12 4s are 48 upon 36 minus 20. Correct? So this equal to LCM cut. So 63 upon 16. 63 upon 16 is the answer. So that is equal to LHS. Clear? अगला सम लेते हैं. सम नंबर 8. Sum number 8 is most important sum, लेकिन easy है. 8th sum. Prove that tan inverse 1 upon 5 plus tan inverse 1 upon 7 plus tan inverse 1 upon 3 plus tan inverse 1 upon 8 is equal to pi by 4. इधर 4 टर्म दिए हमको, तो हम दो टर्म का ग्रुप बनाएंगे. फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म दोनों को साथ में लेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो स्टार्टिंग विद LHS में सम लिखता हूँ फिर से. tan inverse 1 upon 5 plus tan inverse 1 upon 7
plus tan inverse 1 upon 3 plus tan inverse 1 upon 8. Clear? So taking first two term and last two term. Now see the product. 1 by 5, 1 by 7, 1 by 35 less than 1. So simple formula. So tan inverse 1 upon 5 plus 1 upon 7, 1 minus 1 upon 35. Same thing here. Plus tan inverse 1 by 3 plus 1 by 8, 1 minus 1 upon 24. Now taking LCM here. So this equal to tan inverse 7 1 7 plus 5 1 5 upon LCM cut. So 35 minus 1 plus tan inverse 8 1 8 plus 3 1 3 upon 24. So 24 minus 1 इधर भी LCM cut. So this equal to tan inverse 12 upon 34 plus tan inverse 11 upon 23. So 2 6 2 12 so reduce कर दिया मैंने 2 17 sorry. So reduce form tan inverse 6 upon 17 plus tan inverse 11 upon 23. Now again see that product is less than 1, correct? Product is less than 1. So apply simple formula. Tan inverse 6 upon 17 plus 11 upon 23. 1 minus 11 6 66 upon 23 into 70, that is 391, right? So again, so this equal to tan inverse 23 6 23 into 6 138 plus 11 into 70, that is 187 whole upon 391 minus 66. LCM cut. Now 187 plus 138, that is equal to tan inverse 325 upon 325. This minus this 325. This and this cut. So tan inverse 1, that is equal to tan inverse 10 pi by 4, that is equal to pi by 4, that is equal to RHS. तो हम इतना ही रखते हैं, बराबर है? नेक्स्ट सेशन में करेंगे.